हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बोलते हैं हमारे में गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग नहीं बोलते, वो बोलते हैं आप सुबह जिंदा होते हो, आप सुबह जागते हो। तो एवरी टाइम ऑफ द डे फॉर एन एंटरप्रेन्योर इज गुड मॉर्निंग। इट्स देयर इज नो गुड आफ्टरनून, देयर इज नो गुड इवनिंग फॉर अस। Thank you for spending this day with me in the middle of the Valentine's week. Uh, I've been told today is what, Rose Day, Hug Day, Hug Day. So I hope that you've hugged your loved ones today. Are there teachers in the room? Are there any faculty in the room? Great, this is going to be fun. So, respected students, I'm skipping teachers, guests, and I am Rishabh Agarwal from BuildMate Podcast, India's #1 construction podcast. And I'm elated to be here and actually honored to be a part of this great room. Your institution is a great one. Started back in 1964, which was the same year that my family business got started. We'll complete 60 years in May this year. I am an engineer, but not a civil engineer. I love architecture and design, but I'm not an architect. I love science and technology, but I'm not a researcher. I am merely a product of years of experience that life has given me. For me, entrepreneurship and being a creator are synonymous. Uh, I always this comes very close to my heart when it says that if you want to predict your future, then you must create it. You must write it. This was said by Abraham Lincoln, and this is very much synonymous to my belief system in the last 3 years. पिछले 3 साल के अंदर there have been developments in my business life and in my personal life where I've gone outside my comfort zone and done something which was unique to me and which was unique to my family as well. I got a lot of resistance as well. सबसे बड़ी resistance होती है आपके loved ones से. आप उनसे जीत नहीं सकते हो, right? So I had to define each and every situation to them. I had to justify my actions to them. Then eventually I gave up. एक साल के बाद मैंने बोला अभी मुझे जो करना है मेरे को करने दो. Give me some time. So I don't have my father now with me, but my mom told me कि 1 साल देती हूँ तेरे को. And I asked her for 2 years when I started this podcast. On Feb 3rd, abhi, Faraz, who helps me with the production of the podcast, he just told me, bhai, do you remember we were at 75 followers on 3rd of Feb 2023, which was last year, right? आज Feb 12 पर हम लोग, we're at 162K. So now moving forward to the question and answer session of the evening. First question. As a podcaster, what are some common themes or insight you have discovered while interviewing in industry leaders in the construction sector? सबसे पहला मैं सोचता था कि शायद there is a lot of lack of awareness in India. But having started the podcast, I realized there is a lot of lack of awareness in India. फंड ही क्लियर नहीं है. जितने होम ओनर्स घर बनाते हैं, स्पेशली इन अ सिटी लाइक दिल्ली ऑल्सो, एंड आई एम अंडर एस्टिमेटिंग दिस नंबर, 80% से ज्यादा आर्किटेक्ट नहीं रखते हैं. पता है आपको? आई मीन इट. अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन अकाउंट्स फॉर 69-70% ऑफ द कंस्ट्रक्शन इन दिल्ली. वो लोग आर्किटेक्ट के बिना काम करते हैं. सो दे लुक एट देयर नेबर्स बिल्डिंग एंड दे लाइक वो कैसे बना देंगे. स्ट्रक्चरल इंजीनियर तो पता ही नहीं उनको क्या होता है. किसी को मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर बोलता हूं तो मेरे को ऐसे दिखता है कि तू क्या खर्चा करवाएगा. Do you know what the cost of a structural engineer is per square feet? Any guess? Wild guess. एक structural engineer क्या charge करता है per square feet? Any idea? 1,000 rupees per square feet. कोई नहीं hire करेगा. कितना? 50 rupees. 140 somebody said. 3 से 4 रुपए per square feet. यार 10,000 square feet की बिल्डिंग है, अगर आप slabs सारी काउंट करेंगे, so they're charging 40,000 for a building. And by the way, those designs do get reworked. उसके बावजूद स्ट्रक्चरल इंजीनियर को हायर नहीं करता. इट्स चीप. वी डोंट रिस्पेक्ट प्रोफेशनलिज्म इन इंडिया. वी नीड टू चेंज इट by becoming amazing professionals. That is where we begin, right? Another thing that I learned was civil engineers at a higher level are very, very, very humble people. They are always forthcoming. आपको दिखेगा, मैं आज 3 वीडियो जो आप लोगों के लिए प्ले करूंगा, they are very, very welcoming. आते हैं और खुद से बोलते हैं अच्छा क्या हेल्प चाहिए बताओ. And these are civil engineers at the government levels as well. These were my 2 insights. Second question. Leaders are often seen as the backbone of successful men. In your opinion, are leaders born or made? If leaders are made, what characteristics can individual develop to become effective leader? I'm going to say something controversial here. Have you seen a leader born? बॉर्न लीडर्स जिंदा हैं अभी हमारे पब्लिक डोमेन में.
दो बॉर्न लीडर्स का नाम ले लो. One belongs to the Gandhi family. One couple of them belong to the Ambani family. Do you think their kids are as same as Mukesh and Anil? I think Mukesh eclipsed his father's name, right? Dhirubhai's. Dhirubhai was a legend. Mukesh Ambani has done amazing at unifying businesses in India and conquering the world, actually. Do you know football or the team league or football league is owned by Reliance in India? You know that? Kudos. इतना बड़ा बन जाओ कि पूरी पूरी टर्मिनोलॉजी आप ओन करो. What else is needed? And ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने. Do you think their kids are born leaders? Do you know how many trainers they would be having just to get on that stage and speak properly? कितने लोग ट्रेन कर रहे होंगे उनको, उनकी डाइट को मॉनिटर कर रहे होंगे, उनकी हेल्थ को मॉनिटर कर रहे होंगे, उनको गाइड कर रहे होंगे, उनकी परफॉर्मेंस कोच बने होंगे, उनके इमेज कंसल्टेंट बने होंगे. बाय द वे देयर इज अ करियर कॉल्ड इमेज कंसल्टेंट. अगर आप लोगों को नहीं पता तो बता दूं. पता है कितने पीआर वाली कंपनीज लगती होंगी उनको अपीवल के लिए? आई डोंट थिंक लीडर्स आर बॉर्न, बट दे कैन बी बॉर्न इनटू एडवर्सिटी. Leaders can be made into adversity. If I tell you something, I'm an authority on something and you have to take my permission, I keep saying no. Nahi hoga. I keep saying no. But you're a non-conformist. What will you do? You'll find a path around it. Ye to nahi maan raha hai. I'll do something on my own. One of my cousins, she said ki, bhaiya, please, my Masi's daughter, bhaiya, can you please convince my mom that I want to go abroad and study? I'm like, okay, I'll do it. But do you have an admission from somewhere? She's like, no. Have you applied somewhere? No. अरे तू admit तो लेटर लेके आ, फिर मैं देखूंगा ना. I'll speak to Masi, यार. Get a foot in the door. Sometimes people will open a door. Sometimes you'll have to create it. And you don't need force to open a door. I swear you don't need a force to open a door. Just constant persistence. Leaders can be made. Make sure that you know yourself by the time you complete your degree. Find yourself before you go out there and lose yourself. आप में से कई लोग होंगे जो बाहर जाएंगे और हो सकता है आपकी स्टेट चेंज हो जाए, आपका सिटी चेंज हो जाए. You'll be living in a new atmosphere and then you'll have to find yourself there. But अगर आप इस कॉलेज से जब ग्रेजुएट होकर निकल रहे हो and you know yourself very well, then you know what's important for you, what's not. You know कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है. You can limit your choices. We can talk about minimalism जितना भी हम चाहें कि I want to be a minimalist. I am a practicing minimalist. तभी मैं बोल रहा हूँ. लेकिन आप अपनी choices limit कर सकते हो. You can't control the world outside. Know yourself. And one thing that a leader always has, even in this room, is empathy. Because leadership is not about yourself. It is about the other person. It is empathy. But जब आप अपने आप को जान जाओगे ना, ये वाला ज्ञान थोड़ा ज़्यादा heavy हो रहा है ना, but जब आप अपने आप को जान जाओगे, उसके बाद आप empathize कर पाओगे किसी और के लिए. And you can never be successful without a good team. Any leader that is a leader has a swarm of people behind him or her. लोग support करते हैं उसको, तभी वो इंसान ऊंचा है. So you need that support of friends, family, and others. You need to have that spark in you. We don't say a lot just with our mouth. We speak a lot with our body language. We speak a lot with our eyes. We speak a lot with our intent. Leaders can be made 100%. 100%. Next question. In terms of investment opportunities, which kind of startups do you believe offer the potential for higher profits? I thought about this question a lot, but unfortunately, in the startup industry right now, the kind of projects that people are looking for are those that can actually capture more market than be profitable. So market capturing किसी भी cost पर अगर हो जाए, they don't care if it's profitable because it will be sold at a higher valuation. Secondly, if the question is that what kind of businesses get funded easily, वो उसका बड़ा simple आंसर है. एक है कि एक वो business जो scale up हो सकता है और दूसरा वो जिसमें जिसको आप easily copy नहीं कर सकते. Anybody, Tom, Dick and Harry cannot copy you. So those two ideas are always something that will pique the interest of the investor. Of course, there are ideas which have been copied. For example, Blinkit है, तो साथ में Zepto भी खुल गया है. There was something called Uber Eats. There was something called Swiggy Delivery or whatever it was. But वो सारे ideas copied हैं. But वो copied क्यों हैं? क्योंकि वो proof of concept था.
Are you familiar with the terminology proof of concept? No? Okay. So I give you an idea, like let's say you're investors, right? Shark Tank खेलते हैं, तुम सारे judges हो Shark Tank पे, और मैं अपना business pitch कर रहा हूँ तुम लोगों को. So if I give you an idea, you will ask me कि तूने अब तक किया क्या है उसमें. It's not an idea that sells. It's not an idea that sells. It is not even a vision that sells. Vision does sell. But वो idea जब तक मैंने कुछ नहीं किया अपनी तरफ से, you guys will not invest in me because I have not invested in it. So after investing or having done something in it and having achieved that first step, that business is scalable. That business is investable. तो आपको अगर स्टार्टअप का कोई आइडिया है, यहाँ रूम में कितने बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे आइडिया सोचे? बच्चे ही कह रहा हूँ यार, सॉरी, 20 साल का एज गैप है आपका मेरा शायद. आप लोगों के पास ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने एक अच्छा आइडिया सोचा था किसी दिन, लेकिन आप वो भूल गए? लेट्स हैव सम हैंड रेजेस यार, कम ऑन, एवरीबॉडी हैज गुड आइडियाज. शर्मा क्यों रहे हो? नहीं, किसी के पास कोई आइडिया नहीं था ना यार. यू हैड एन आइडिया and then later you saw somebody else do that idea and run with it. ऐसा हुआ कभी? I called up my mentor from University of Michigan. सुबह की B स्कूल की क्लास थी फाइनेंस की, and I came out running of my lecture के बीच में, and I called him up. मैंने कहा संजय जी एक काम करते हैं यार प्लीज. कहते क्या हुआ? मैंने कहा मेरे को एक .com खोलना है फॉर अ मार्केट प्लेस. 2010. I thought Amazon was like picking up like crazy in 2010 in the US. मैंने उनको बोला एक मार्केट प्लेस खोलनी है. कहते क्या करना पड़ेगा? मैं कहा मुझे नहीं पता. एक वेयर हाउस खोलना पड़ेगा, शायद बहुत सारे मटेरियल्स रखने पड़ेंगे. आई वांट टू क्रिएट अ मार्केट व्हिच हैज एवरीथिंग. मुझे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं था, बट आई रैन विद इट एंड ही शॉट इट डाउन. इसे तू सारे मटेरियल्स कैसे रख सकता है एक वेयर हाउस के अंदर? आई डिडंट हैव द आंसर. इफ आई हैड एन आंसर मे बी, एंड बाय द वे 2 years later फ्लिपकार्ट केम इनटू बीइंग. देयर वाज अनदर कंपनी जिसका आमिर खान ऐड करता था, व्हिच वाज अनदर मार्केट प्लेस, स्नैपडील. इट वाज बॉट बाय फ्लिपकार्ट, राइट? And multi-million dollar deal as well, right? Startups के idea हैं, so don't keep it an idea, make it into a vision. Are we clear about a vision? Do we know what a vision is? Vision is जो हम देख सकते हैं. If I can see an idea and I can jot down step 1, 2, 3, 4, 5, 6 till end steps, end step being the end goal. मुझे पता है end goal क्या है, जरूरी नहीं है मुझे पता हो, लेकिन मैं 1 से लेके 5 स्टेप लिख सकता हूँ, 3 स्टेप लिख सकता हूँ, 2 स्टेप लिख सकता हूँ. That's where you begin. You've started envisioning that business. It can take shape. जिस चीज का विजन नहीं है वो कभी शेप नहीं लेगा, कभी भी. And call me a cynic if you have to, but अगर आप एक्चुअली किसी चीज को देख नहीं सकते हो अपने मन में, वो कभी शेप नहीं लेगी. So yeah, startups जिनका विजन होता है और जिनका proof of concept होता है, they're catching big funding these days, huge funding. When weighing the decision between working for a major company and pursuing entrepreneurship, how would you assess the risk of involved in entrepreneurship compared to the stability of corporate job? Competition today is not local, it is global. आप दोबारा अपने जहन में ये बात डाल लो. Competition is not just in Jaipur, it is not just in northern India. You don't have a competitor not just in India, you have competition from across the globe. सारी economies open up हो गई हैं. We are hiring intelligence from anywhere. You guys want to be freelancers as well, right? To foreigners, you want to probably freelance some services out to the other people. तो उनको भी तो competition है तुम्हारे से, तो तुम्हें competition होगा ना उनसे. So competition global है. Then choosing a field based on entrepreneurship or based on job, वो आपका personal decision इसलिए है. I don't thrive well in a structured system. I like to break things and remake them. वो मेरा nature है. I thrive in the unknown. मुझे बहुत मजा आता है. कैसे चल वहाँ अंधेरा, चल वहाँ चलते हैं, देखते हैं. The road less taken. बचपन से सुन लिया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अटक गया दिमाग में. The road not taken. The road not taken. But there are some people who thrive really well in a structured format. ये अच्छा बना हुआ स्ट्रक्चर है, उसके अंदर लोग बहुत अच्छा करते हैं. That is how we have giants like even Sanjay Pant, who's the BIS director from your own university. So it is an individual approach. I think the answer lies in the question where you can find yourself within these 3-4 years. आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि आप किसी और के लिए काम करना चाहते हो अपने लिए. You'll find that. I am biased towards being an entrepreneur. My wife works for Ericsson. मैं उससे चिढ़ता हूँ, मुझसे चिढ़ती है. I keep looking at her and say, तेरे सैटरडे संडे ऑफ होता है यार, तेरे मजे आ रहे हैं, you enjoying your life. And she's like, you don't even have Sundays off. And because I'm really enjoying my life. We create opportunities for others as well. And if you find 2 like-minded people,
आई थिंक देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज आउट देयर एंड यू कैन एक्चुअली चेंज द वर्ल्ड. और बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, बट जो है वो सच है. ऐसे ही होता है शुरुआत. या एक चीज़ मुझे बोलनी है आप लोगों को कि मेरा एक बहुत चैलेंज चल रहा है इस बिजनेस में. जब व्हेन आई गो हायरिंग, लुकिंग फॉर हायरिंग, सो आई लुक फॉर पीपल, जिस तरीके के लोग हमें चाहिए होते हैं ना, वो लोग होते हैं जो जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं करते. दे आर एंटरप्रेन्योर्स इन देयर ओन माइंडसेट्स. ऐसे लोग मिलते ही नहीं हमें. What role do you believe minimalism play fostering innovation and efficiency in construction projects? Minimalism. So minimalism is a different concept. I don't think construction projects are minimalistic. कोई भी एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है ऑलवेज गोज बियॉन्ड बजट. किसी ने 1 करोड़ रुपए का बजट रखा है, वो 2 करोड़ चला जाता है. किसी ने 2 करोड़ का रखा है, वो 3 करोड़ चला जाता है. किसी ने 20 करोड़ का बजट रखा है, वो 50 करोड़ चला जाता है. इट्स कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आर नॉट मिनिमलिस्टिक. डिजाइन कैन बी मिनिमलिस्टिक. Philosophy of that building can be minimalistic, but I don't think a construction project is minimalistic. Why do you think students of computer science often lean towards freelancing opportunities, whereas students of civil engineering may not pursue similar paths? अब मैंने जो इसका आंसर लिखा था वो कंट्रोवर्शियल है. When I shared the answer with Faraz, he's like, भाई ये मत बोलना. I don't think freelancing is a career. I am traditional in my approach. But he told me that it is a career. And he showed me a proof. He opened an app on his phone and he says, jitni bhi services hain, especially related to design, they can be outsourced. And they're getting paid really well. Freelancing is a great option, especially for you guys as well. बहुत सारी सर्विस हैं. छोटी सी सर्विस बताऊं, बार बेंडिंग शेड्यूल. 99% of the buildings don't use bar bending schedule and they want it. सर ये की ड्राइंग पढ़ो, बार बेंडिंग शेड्यूल बना के दो आर्किटेक्ट्स को, पीएमसीज को और बिल्डर्स को और कॉन्ट्रैक्टर्स को. कॉन्टैक्ट देम. ऑनलाइन एक पोर्टफोलियो बनाओ, 2 साल के अंदर बिकम अ चैंपियन एट इट. चार्ज देम बाय द आवर. यू कैन इवन एक्सपोर्ट दैट सर्विस, राइट. बार बेंडिंग बहुत सिंपल है यार. बार बेंडिंग शेड्यूल बीबीएस बनाओ और स्टार्ट डूइंग दैट राइट नाउ. डू इट इन कॉलेज इफ यू कैन, बिफोर यू ग्रेजुएट. डू इट. शो योर डिग्री. टेल देम यू आर फ्रॉम MNIT. Tell them you're from a premier institute and you're qualified. But having said that, freelancing के साथ एक कल्चर आता है. क्या था वो? वर्केशन और स्टेकेशन. Gen Y and Gen Z in the room, right? Gen Z is being told कि staycations are cool. Workations are even cooler. I'm sorry. Those are businesses telling you that this is the marketing I need to run my business, which is a workation or a staycation business. Whatever money you're earning, you're giving to them. You're not even experiencing. You're sitting in that hotel, working on your laptop, being busy for that 8 to 10 hours. अगर आपसे कोई कहता है ना कॉलेज से बाहर निकल के 8 घंटे की जॉब है, झूठ बोलते हैं. कोई नहीं होती जॉब 8 घंटे की. 8 से 12 घंटे मिनिमम जॉब होती है प्राइवेट लाइफ में. और अगर आप बिजनेस ओनर हो और कोई आपको कहता है 8 घंटे बिजनेस करना है, झूठ बोलते हैं. 24 घंटे बिजनेस करना है. बिजनेस में रात को 3 बजे भी नींद नहीं होती है. मेरे ट्रांसपोर्टर्स मुझे रात को 3 बजे फ़ोन करके डरा देते हैं कई बार कि सर ट्रक पकड़ लिया हमारा. क्यों पकड़ लिया यार? कहाँ पकड़ लिया? समवेयर ऑन द हाईवे, समवेयर ही इज, आई डोंट नो, हिज ट्रक इज नॉट वर्किंग एंड ही कॉल्स मी. बिजनेसमैन की कोई छुट्टी नहीं होती. एंड आई हैव अ फनी स्टोरी टू टेल यू. मेरी अरेंज मैरिज हुई थी. 2014 I got married. 13 I met my wife for the first time. So my dad told my would be कि बेटा मेरे बेटे को सोच के हाँ बोलना, ये बिजनेसमैन है. एंड ही सेड दैट 3-4 times within the next 2 minutes. तो कहते बेटा मेरे बेटे को सोच के हाँ बोलना, ये बिजनेसमैन है. एंड शी वाज वर्किंग, शी वाज एन IT प्रोफेशनल बैक देन इन रिलायंस. तो इवेंचुअली उसके मुंह से निकला बड़ी रिलक्टेंटली कि अंकल ऐसा क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? कहते क्योंकि यू नो, ही पॉइंटेड टू माय मम एंड ही सेड तेरी आंटी की एक ही कंप्लेंट है मुझसे दैट आई हैव नॉट गिवन हर इनफ टाइम बिकॉज आई एम अ बिजनेसमैन. I have not had the time. He, knowing him and having worked with this idiot, he will not have the time for you. So you need to understand that today. My dad did me a huge favor, by the way. Huge favor. He managed expectations right at the beginning. But anyhow, so guys, इसके अंदर में computer science, I don't think you need to compete with them anymore. I think demand वहाँ गिर रही है क्योंकि supply बहुत ज़्यादा है. और यहाँ डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई है नहीं. कौन जीतने वाला है आगे? इफ यू स्टे लॉयल टू योर फील्ड एंड एक्चुअली वांट टू एक्सेल इन इट,
big ticket sizes are available to you guys. Could you shed the light on the significant pay scale differences observed in the Yeah. civil engineering field, particularly between higher and lower positions? This is true for every career. ये सवाल मैंने एक आर्किटेक्ट फ्रेंड से पूछा था, आर्किटेक्ट मनु गोयल, जिनके साथ इसके बाद वाला एपिसोड आने वाला, आई थिंक. Architect Manu Goyal belongs to a firm called Novark. She is the one who designed the smart city of Bareilly. She has an office in Delhi and Bareilly, both, right? Third generation architect. मैंने उनको पूछा कि यार सिविल इंजीनियर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि पे स्केल डिफरेंस क्यों होता है at the very beginning and at the very end. She's like, this is true for architects as well. पहले 5 साल निश ढूंढने में निकल जाते हैं यार, एक्सपर्ट बनने में निकल जाते हैं. You have to toil hard. और ये सिर्फ जॉब्स में नहीं है, बिजनेस में भी है. You don't break even in your business for the first 5 years. Minimum. शायद ज़्यादा ही लग जाता होगा बिजनेस में तो और भी ज़्यादा. सो पे स्केल डिफरेंसेस इन एवरी प्रोफेशन. कुछ भी आसान नहीं है पहले शुरुआत में, सबको टॉयल करना है, सबको मेहनत करनी है. जस्ट गेट रेडी फॉर द ग्राइंड. How can individual determine if entrepreneurship is the right path for them? I don't think entrepreneurship is for everyone. I really don't think so, and I don't think somebody who's not sure of themselves should try it. Entrepreneurship is a lot of things put together. It's a mindset. And like I said, you need to look within yourself. Do you identify problems easily in the world outside? And if you do, then do you identify the solution to it very easily? आप ये दो ही चीज़ कर लो, आपकी टॉप जॉब लग जाएगी इस कॉलेज में. इफ़ यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर. इंटरव्यू के अंदर ज़्यादातर आपके सीनियर ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि आजकल क्या पूछ रहे हैं, बट इंटरव्यूज़ में हर किसी को एक प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए. एवरीबडी वॉन्ट्स समबडी हू थिंक्स आउटसाइड द बॉक्स. नॉर्मल इंटरव्यूज तो हो ही नहीं रहे यार. सबको या तो देखो, somebody has to fill up the crowd, then they'll take everybody. But my point is, they need somebody who stands out. I am a non-conformist, and it bodes well for me to make my own path. एक एटीट्यूड और होता है बिजनेस ओनर्स में, वो अनशेकेबल होते हैं. Nothing surprises me anymore. I expect it. मैं ये नहीं कह सकता मैं प्रिडिक्ट कर देता हूँ फ्यूचर, बट nothing surprises me. Somebody who's been working in my company for 30 years told me 2 days back that he's leaving. And I smiled at him and I said, "Ab बैठो सामने क्या हुआ?" And later I went out and I spoke to him. He was just upset about a small thing. And he had created a whole scene in the office in front of everybody that he's leaving. And I spoke to him very human to human, and he melted immediately. And on a Sunday, he was there at the job, at a site where work was going on. Entrepreneurship is about handling anything that's thrown at you. You must be comfortable in your skin. और वो business सिखा भी देता है तुम्हें. Thank you. Reflecting on your journey, what was the first win or success that boosted your confidence? I think that would be the first validation that I got within the family. When I joined my dad's business after having rejected 3 different job offers, तो मेरे डैड एक बिजनेस नहीं करते थे, वो था टाटा स्टील के साथ. टाटा स्टील came up with a product in 2005 where they started selling TMT per piece. Steel as a norm is sold per kg. Tata Steel TMT बाहर लेके आया per piece बेचने के लिए. So there was this business manager, Reggie Phillips. I will never forget that day. And it was my initiation. By the way, I was still doing my engineering 2005 में. और क्योंकि वो अग्रवाल नाम लिखा है ना पीछे, तो हमें बचपन से सिखा देते हैं कि क्या कर रहा है, खाली है, काम पे आ जा. तो चले गए काम पे. Reggie Phillips साहब बैठे थे and he explained the product to me and he said, my dad had said no to him. कि पागल है, there is a norm in the market, steel is sold by per ton. You can't sell steel by piece. And he told me the mathematics of it. 12 मीटर का बार है, the dias are perfect, density of steel is fine, we can actually come down to an average value per bar. And he showed me a printed rate list that Tata Steel had given, and there was a date on it. I'm like, this gives transparency. This will sell. I took that moment, and in the next 10 years, 2008 to 10, we were the highest selling trader for Tata Tiscon TMT under me for 2 years. That was the first validation where my dad gave me, where we were called to a distributor felicitation, and my dad grabbed my hand and he took me to the stage and he said, and they were, होता था ना पुराने, Tata Steel is a very traditional company. They have old Indian values. तो वो shawl पहनाते हैं ऐसे गले में. तो my dad pulled me ahead of him and he made me put that shawl on myself, and I was so embarrassed. ये करके आ रहे हो यार, ये तो बुजुर्गों को चढ़ाते पहनाते हैं शॉल, आप मुझे क्यों पहना रहे? But that was his first way. He was a man of few words. वो कुछ ज़्यादा कभी, he was not a dad who would say कि शाबाश बहुत अच्छा करा तुमने. No, this was his way. So he put me in front and he said, you know, give it to him.
तो उन्होंने वो मुझे शॉल पहनाई. It was very weird for me. And that burden of that shawl is still on my shoulders. I still feel it. I can never forget that moment. That was probably my first win. And that even made me 100% sure that I was made for business. What risks and sacrifices are typically associated with starting and running your own business? Your own idea, your own business is like your own child. And I think you guys won't understand this right now, right? None of you have children, right? Okay, great. Just making sure. In this day and age, everything is possible. You tend to love and nurture your business like you love and nurture your child, and you become possessive about it. What are the sacrifices that you will make for your own children? There is no limit for it. So you sacrifice everything. You sacrifice your family time. You sacrifice your friends. I don't have any friends. I have a lot of people who come around, who are my associates. I am friendly to them. They are friendly to me, but they're not my friends. So don't lose that. I think one of the biggest sacrifices that I made was just become so busy that I don't have any more friends. I miss having a good friend or few good friends in my life. और मैं दोस्त नहीं मानता. मेरे ख्याल से दोस्ती अधूरी होती है जब तक वो आपका राजदार ना हो. राजदार वर्ड को लुकअप करेगा अगर आपको नहीं पता कि राजदार क्या होता है. दोस्त मत बनाओ, राजदार बनाओ. And be their राजदार. दोस्ती निभाना एक बहुत मुश्किल काम है. So if you guys can actually walk out of here, alumni to this college, and you can look back 20 years as an alumni and still connect with your friends, I think you've done a good job. So one of the biggest sacrifices that I made was let go of my friends back in school and college. I'm still good friends with some of them from Michigan, but बाकी नहीं है. तो वो दोस्त छूट गए. So I hope you guys will not make the same mistake. What are some key strategies for becoming successful entrepreneur? Answers क्या questions क्या होते हैं? Why, what, how, when, where? Major 5 questions ही हैं. उसके अलावा भी होते होंगे शायद कुछ. But whenever you want to think about business, you want to think about entrepreneurship, answer the why first. Why do you want to be an entrepreneur? Why do you want to do this business? Why do you think this idea will work? जितने भी whys हैं ना उनको आंसर कर लो पहले. What will probably come after that? The answer to the what, and how will answer itself. And ये मैं philosophically नहीं बोल रहा किसी book में पढ़ के. I mean it. The why should be very clear, and the why could be as simple as I think I can do it. That why will work if it's a simple idea. जैसे ये podcast के साथ यही था कि why I think I can do it. जब मैंने पॉडकास्ट शुरू किया था ना तो मैंने सोचा था अपने एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग मैनुअल बनाऊंगा. सच में मैंने सोचा था मैं पॉडकास्ट बनाऊंगा या कुछ करूंगा. आई थॉट आई विल हायर अ टीम. बार बार कौन ट्रेन करेगा? आई जस्ट रिकॉर्ड दीज इंस्ट्रक्शंस एंड आई विल कीप देम ऑन हैंड एंड आई विल गिव द ऑडियोज टू देम एंड दे कैन लिसन एंड दे कैन गेट ट्रेन्ड. सो आई वांटेड टू क्रिएट अ ट्रेनिंग ऑडियो फॉर देम. बट देन अ कस्टमर हु वाज सिटिंग विद मी ही सेड, सर मैं नीचे फाउंडेशन में टाटा स्टील लगाऊंगा और मैं ऊपर सेकेंडरी स्टील लगा दूंगा कोई भी. मेरी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी बिल्डिंग की, मुझे क्या दिक्कत है? मैंने उसको बोला इसका आंसर मुझे नहीं आता है. There were gentlemen who were civil engineers. Mr. Vileen Sharma was the Delhi state head for Ultratech Cement, उनके टेक्निकल सर्विसेज के. He was there. वो आए हुए थे मेरे पास. मैंने उनको बोला बॉस किसने सवाल पूछा जवाब दे दो. कहता मुझे नहीं आता है. गो टॉक टू संगीता विज, स्ट्रक्चरल इंजीनियर. उससे पहले स्ट्रक्चरल इंजीनियर मुझे पता था क्या होता है, बट मुझे ये नहीं पता था कि इतनी सरलता होती है इस काम में. And how essential it was. That's how I started finding answers. So वो why create हुआ that I need to find the right answers for my customers. I need to upgrade myself first. Podcasting came in because of University of Michigan and its radio. वो दिन याद आ गया मुझे. मैंने कहा चलो ठीक है, let's do this. And I got lucky. I just started doing it. One of the things Faraz keeps telling me is कि भाई मैंने आपको बोला कि स्टूडियो लगाना है. He gave me a list, right? कितनी आइटम 12-15 आइटम्स की लिस्ट इसने व्हाट्सएप की मुझे. These things are required for the स्टूडियो. और मैंने 2-3 दिन बाद इसको बोला कि ये चीज़ें ऑर्डर हो चुकी हैं, 2 दिन में आ रहा है, 2 दिन में आ रहा है. कहता आपने ऑर्डर भी कर दिया. वन ऑफ द थिंग्स आई डिड नॉट वेट ऑन वाज टेक दैट लीप ऑफ फेथ. इफ यू एक्चुअली बिलीव इन समथिंग जस्ट जंप फॉर इट गाइस. मत छोड़ो यार, टाइम बहुत जल्दी भाग जाता है. आई वॉज जस्ट 25, अब भी 25 साल का नाम है. आई डोंट रिमेंबर द लास्ट 15 ईयर्स. भाग गए. तुम्हारा भी निकल जाएगा ऐसे 15 साल, पता नहीं चलेगा. अगले 15 साल भी ऐसे भाग जाएंगे मेरे. एंड आई रियलाइज इट. सो गो फॉर इट, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी. So last question, sir. Just wait. Let me pick this one. Please.
Thank you. What role do entrepreneurs play? If you were initially trained as a mechanical engineer, why did you balancing studies, extracurricular activities? Freelancing can be a challenge. हम बात कर चुके freelancing के बारे में. What methods do you employ to effectively manage deadlines by establishing airtight processes? Path A से path Z तक सारे process paper पे लिखो. Create a dot. Draw a line between them. Actually draw that diagram if you want to complete a process. एयर टाइट प्रोसेस का मतलब होता है उस डॉट पर जब वो पहुंच गया प्रोजेक्ट वहां कंप्लीशन हो जानी चाहिए उस वाले टास्क की. इट विल रन स्मूथली. दैट्स एज सिंपल एज दैट. उसमें कोई भी वो नहीं है. नाउ वन ऑफ द थिंग्स आई स्पोक अबाउट विजन एंड आई वांट टू टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट अ स्मॉल बिट अबाउट माय जर्नी गाइस. आई कीप सेइंग आई डोंट हैव माय डैड राइट. थोड़ा सा बम कर दूंगा मैं आप लोगों को इस पूरी कहानी से. हो सकता है थोड़े से आप लोग बोर भी हो जाओ बट जल्दी से बता देता हूँ बहुत जल्दी से. I am a non-conformist. Psychologists would know better, but I think this is the trait of an elder son or an elder daughter in the family. Now, I didn't want to step on my father's shoes. मैंने मिशिगन की स्टोरी आपको बताई और वापस आने के बाद I could have done the same steel business. मैंने डिसाइड किया ये तो डैड चला रहे हैं because I had given a running ship to him and I went for 2 years to do my masters. अब वो चला रहे थे 2 साल से उसको. जैसे मैं वापस आया मैंने बोला मुझे ये नहीं करना, ये आप कर रहे हो. I never wanted to be in the way of a giant like my father. नहीं तो वो मुझे क्रश कर देते और मेरी आइडेंटिटी जीरो हो जाती. सो आई स्टार्टेड द डोर्स एंड विंडोज बिजनेस. आई स्टार्टेड विद ट्रेडिंग एंड दैट कंपनी डिसाइडेड दैट दे वांट टू सेल डायरेक्टली. सो माय शॉप वाज शट विद इन 6 months. शोरूम बनाया 12-15-20 लाख रुपए लगाया, वो बंद हो गया. एंड आई डिसाइडेड ओके स्क्रू दीज गाइज, आई विल स्टार्ट माई ओन मैन्युफैक्चरिंग, आई विल कम्पीट विद दैम. तो मैंने अपनी फैक्ट्री चालू कर दी विद अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस इन द फैमिली बिकॉज वी कम फ्रॉम अ लाइन ऑफ ट्रेडर्स. आप में से कुछ फैमिलीज ऐसे होंगे जो ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं. तो वो ट्रेडिंग बिजनेस अपने फादर्स या अपनी मदर से जाके पूछेगा. हम लोग मैन्युफैक्चरर्स नहीं होते. जो ट्रेडर्स होते हैं उनका माइंडसेट नहीं होता मैन्युफैक्चरिंग का. इनफैक्ट वी विल ऑलवेज हैव बैड एग्जांपल्स इन द फैमिली कि मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज भैया बहुत खर्चा होता है, बंद हो जाती हैं. राइट. आई स्टार्टेड इट द ईयर आई गॉट मैरिड एंड स्टार्टेड माई फैक्ट्री. आई लॉस्ट माई डैड एंड माई फादर वॉज रॉब्ड एंड शॉट इन फ्रंट ऑफ माई ऑफिस. आई वॉज 28 and I have a beautiful family, guys. I have a very nice family. My father was a legend in the industry, and I lost him in 10 minutes. When I met him at the hospital, when I reached out to him, he was not there anymore. I will never forget such moments in my life. कौन भूल सकता है, right? मेरा भाई CA कर चुका था, छोटा भाई, and he was doing his law from Campus Law Center. हम दोनों geeks थे हमेशा से, and my mother was a pillar of strength. टाटा स्टील ने उनके ऊपर एक मूवी भी बनाई है बाय द वे 2020 फेब में. एंड फॉर द पॉजिटिव ऑफ टाइम आई कांट शो दैट टू यू बट आई विल शेयर दैट लिंक ऑफ दैट वीडियो विद दीज गाइज. सो दैट्स द स्टोरी ऑफ माई मदर एंड शी वॉज फेलिसिटेटेड बाय टाटा स्टील ऑन विमेंस इंटरनेशनल विमेंस डे इन 2020 बिकॉज शी टुक रेन्स ऑफ एवरीथिंग. शी सेड आज फादर नहीं है बट आई एम देयर, लुक बैक टू मी फॉर आंसर्स. उन्होंने हम दोनों को तैयार कर दिया कि भैया तैयार हो जाओ महाभारत लड़ने के लिए. My Buhaji recited a lot of श्लोक्स from the Bhagavad Gita. वो वाले श्लोक्स थे जब अर्जुन को तैयार किया था कृष्ण ने. तो मेरी बुआ जी ने सुना दिया, मुझे सुनने में बड़े अच्छे लगे. I didn't cry when I lost my dad. But I cried when an employee in my office who had been working with us for 30 years. और जब क्रिमेशन के बाद आप पहली बार अपने शटर्स खोलते हैं ना ऑफिस के, तो चौथा दिन 5वां दिन कौन सा होता है. तो दैट बेचारा देवेंद्र भैया केम टू मी एंड ही सेड भाई साहब मुझे बाकियों का नहीं पता बट मैं आपके साथ सारी जिंदगी हूँ. दैट इज वॉट एंटरप्रेन्योरशिप गिव्स यू. इट गिव्स यू दैट लेगेसी. इट गिव्स यू दैट स्ट्रेंथ इन पीपल हु बिलीव इन यू एंड ही स्टिल वर्किंग विद मी. somebody who was placed in my organization by my grandfather. My grandfather is not there anymore, but वो आज तिवारी जी आज भी मेरी कंपनी में हैं और वो मुझे मेरे बाबा की कहानियां सुनाते हैं. जब मैं 2 साल का था मेरे ग्रैंडफादर गुजर गए थे. Business does amazing things to you and I firmly believe that the show must go on. और किसी ने बहुत सही कहा है, बहुत खूब कहा है, चलती का नाम गाड़ी. आपको ये बनिया माइंडसेट में और मारवाड़ी माइंडसेट में मिल जाएगा. आप लोगों के घर परिवारों में ये बातें होती होंगी कि चढ़ते सूरज को सलाम, चलती का नाम गाड़ी. ये शब्द नहीं है सिर्फ, मैंने इन्हें अनुभव किया अपनी लाइफ में और मैं जानता हूं कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होना है हमें नहीं पता. 2021 आया, सेकेंड वेव, कोविड किक माई एस. आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स बिकॉज कोई फैकल्टी नहीं है यहाँ. कोविड किक माई एस. I was in hospital for 2 months. My road to recovery was 6 months long. My lungs were gone. 25 में से 23 sector were affected.
something kept me alive. There was a bigger power out there who decided कि इसको और कुछ साल जिंदा रखते हैं. I will never forget it. Again, rose to the fore my mom and my brother. अब हम तीन एक ट्राइपॉड बन चुके हैं in terms of our pillars of strength in my organization. अगर आपको स्ट्रक्चर की कुछ भी नॉलेज है, I should tell you that a tripod is one of the strongest structures that can stand on 3 legs. A tripod structure is a very strong one, but it was further strengthened by my team of employees that I have. I support somewhere around 100 families today. और वो beams थे और वो slabs थी जिन्होंने हमारी इस organization को जिंदा रखा. I run 3 businesses because of them. I run 3 businesses because of my mother. And we kept moving, not a day to slack. और छोटी छोटी सक्सेस भी आई. पहले 3 साल हमें नहीं पता था डैड के बाद कि हम क्या कर रहे हैं. वी वर ड्रिफ्टिंग इन टाइम. छोटी छोटी सक्सेसेस आई, बट वी नेवर सेलिब्रेटेड देम. वी मेड एन इन्वेस्टमेंट. वी, लेट्स से, आई बॉट अ पीस ऑफ लैंड, came back home with a registry, sat down like idiots. We didn't have a smile on our face. There was nothing to celebrate because I didn't have my dad there, right? But there was something to celebrate. We should have celebrated that small win. 2 years later, I bought something else. And then we came home again and we were sitting. And my brother looks at us and he says, what kind of idiots are we? If we don't celebrate our successes, who will? Then August 29th, 2014, when I lost him, August 29th, 2023, 9 years, right on that same date, I made the biggest investment of my career till today. The biggest piece of land that I've bought. I love buying real estate and selling real estate. On August 29th, we got the registry done. We came home और हमने जिंदगी में पहली बार अपने डैड के गुजरने के बाद मिठाई खाई. 9 साल बाद. उससे पहले मेरे घर में मिठाई नहीं आई. Guys, there are stories to be told in each of your family holds. Place yourself on a Sunday with your loved ones. सुबह की चाय पियो उनके साथ. Find people on a Sunday to give them their time to you. I swear your Sundays will change your life. समय निकाल लो. मैं preach नहीं कर रहा हूँ. It has changed mine and I believe in it firmly. That Monday to Saturday हमें जो करना पड़ता है हम कर सकते हैं और Sunday को जो हम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं. So thank you so much for having me over, and I think I've had spoken my hearts out with you guys. Thank you so much.